बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो HB हेल्पर स्टूडेंट पे आप लोगों को खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखेगा। इंग्लिश मीडियम में ये गेस्ट पेपर जो है आप लोग देखते जाएं, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू के अल्फाज जो हैं वो तकरीबन सेम हैं, तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करें, तो इसी तरह ये सारा है। तो पहला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 बनता है तरतीब के लिहाज से, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, or difference between reversible and irreversible reaction explained with example, how dynamic equilibrium is established, define chemical equilibrium, or compare macroscopic properties of forward and reverse reaction, write down two characteristics of irreversible reaction, define completion and complete reaction and equilibrium constant, describe law of mass action, what is the relationship between active mass and rate of reaction, what is meant by extent of reaction। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आनी चाहिए फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, और लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए, और उसका ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन आना चाहिए, और हाउ डू यू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ आ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, राइट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, or describe Arrhenius concept and acid Arrhenius concept of acid and base. Write down the limitation of Arrhenius concept of acid and base. What is difference between conjugate acid and conjugate base? What is meant by pH? Give its uses. Write neutralization reaction according to the Lewis theory. उसके बाद why H plus ion act as a Lewis acid. फिर write names and formula of two mineral acid. Write two uses of sulfuric and nitric acid. Write name of any two acid used in synthesis of fertilizer. Define pH and what is pH of pure water. Describe two important characteristics of salt. Define salt and types of salt. What is neutralization? Also give example. Write two uses of sodium carbonate, sodium silicate, calcium chloride, and calcium oxide. Define indicator and universal indicator. What is acid rain? Name an acid used in preservation of food. Difference between Lewis acid and Lewis base. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो explain Lowry Branston concept of acid and base, describe Lewis concept of acid and base, or write down the uses of following, or describe the properties and uses of acid and base। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट, डिफाइन साल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ साल्ट, व्हाट आर इंडिकेटर, एक्सप्लेन हाउ दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो राइट कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एनी टू हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर फार्मूला, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाट इज aromatic compound, give an example, compare an open and closed chain compound with example, how coal is formed, define carbonization, classification of coal, write the importance of natural gas, how are alkyl radical formed, explain with example, write the characteristics of homologous series, what is functional group, give two example, what is meant by ester linkage, define petroleum, difference between primary and tertiary alcohol, or what is uh, uh, meant by term catenation, define isomerism, difference between propyl and isopropyl radical, difference between aldehyde and cotonic functional group। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आते, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इसके ना कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, डिफाइन हाइड्रोकार्बन, गिव द एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, where alkanes are paraffins, write an equation of preparation of ethane, describe use of methane and ethane, what do you know about halogenation of alkanes, where alkanes are reactive, write two uses of ethane, where alkenes called in olefin, what is condition reaction, addition reaction, give example, why are alkanes used as fuel, write two uses of acetylene, name the gas liberated when alkalis react with ammonia salt। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो थ्री यूजेस ऑफ इथेन एंड मिथेन दोनों आने चाहिए, और उसके बाद जो है राइट डाउन एनी फाइव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, डिस्क्राइब फाइव यूजेस ऑफ इथीन, राइट डाउन यूजेस ऑफ एस्टेलिन। तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 12 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 जो है इसका व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, आल्सो राइट जनरल फार्मूला, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, और
What is difference between glucose and fructose? Write physical properties of monosaccharides. Next, I write characteristics of oligosaccharides. How to justify that the amino acids are building blocks of protein. उसके बाद what is difference between ghee and oil? Write down two characteristics of fats. What is function of DNA? What is the function of RNA? Write the sources of vitamin A and D. Write down disease occur by the deficiency of vitamin. Describe importance of vitamins. How do plants synthesize carbohydrates? लॉन्ग क्वेश्चन इसके क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, तो डिस्क्राइब फॉर यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. What are lipid? Write their sources and uses. Write down note on DNA. Write down the sources and diseases due to deficiency of some fat soluble vitamins. Next, chapter 14. What is stratosphere? What is the temperature range of stratosphere and mesosphere? Write down the name of stratosphere regions, difference between primary and secondary pollutants of air. Why CO2 is called greenhouse gas? Write two effects of global warming. What threats are human health due to SO2 gas as air? Write effects of ozone depletion. How is ozone layer formed in the stratosphere? तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, तो चैप्टर नंबर 15 देखते हैं. तो चैप्टर नंबर 15 में पहला क्वेश्चन है, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? राइट इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. राइट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट. डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. व्हाट इज जॉर्डिस? गिव इट सिम्टम्स. हाउ waterborne disease can be prevented. What are density and typhoid? What is the reason of jaundice and typhoid? What are pesticide use? How does sodium zeolite और soften hard water? तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. डिस्क्राइब टू मेथड टू रिमूव परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस. और सिंपल आप लिखेगा जो वाटर बोर्न डिसीजेज हैं तो वो जो है आप लोगों को आनी चाहिए. उसके बाद चैप्टर नंबर 16, डिफाइन मेट्रोलॉजी. डिस्क्राइब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. नेम इन द टू प्रोसेस विच इन्वॉल्व in metrology for extraction of a metal in the pure state from its ore. उसके बाद write the formula of mate and urea. उसके बाद write down the name of any two raw material used for solar process. Write advantages of solar process. How NaHCO3 is converted into Na2CO3. और उसके बाद है how ammonia is prepared by Haber process. Next I write does of petroleum ether. Or write down the name of different fraction of petroleum. Define petroleum and crude oil. Difference between diesel oil and fuel oil. तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय और. डिस्क्राइब थ्री मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ और. राइट थ्री एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वर प्रोसेस. स्टेट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया. और राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं 16 चैप्टर के. जिन जिन चैप्टर के शार्ट लॉन्ग बताए हैं, शार्ट तो सारों करने हैं, लॉन्ग जिन जिनके बताएं वो करें. इंशाल्लाह सारा पेपर आपका यहीं से लगेगा. दुआएं करेंगे आप. बाकी जो है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.